Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. Friends, last few lectures start the chapter number 4, issue of debentures. Discuss this chapter's various point. Issue of debentures, the provisions of various types of debentures, then the provisions of Company Act 2013, Company Rules 2014, SEBI's guideline, the details of provision for issue of debentures as per Company Act 2013, the provision as per Companies Rules 2014. The various points discussed the last few lectures, and this chapter's last point is procedure for issue of debenture. So friends, today we are going to learn about procedure for issue of debenture. The various procedures of issue of debenture. First is pass resolution in board meeting, then hold extraordinary general meeting, filling with register of company, obtain credit rating, enter into underwriter agreement, then issue prospectus, offer letter, letter of offer, open separate bank account, receiving application money, holding board meeting, issue of debenture certificate, make entries in the register of debentures, etc. So friend, discuss the procedure of issue of debenture one by one point. First is board meeting, board resolution. According to Indian Company Act, the board of directors is required to pass a resolution is board meeting. यानी according to Indian Company Act, the board of directors is required to pass resolution in board meeting. यानी जो भी डिबेंचर इशू का रिजोल्यूशन है, वो रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं, पास करते हैं. The resolution should clearly specify number of debenture to be issued, face value of debenture, rate of interest payable, term of redemption, etc. यानी the resolution should be clearly specify, यानी जो resolution board of directors board meeting में पास करते हैं वो resolution clearly specify करता है कि number of debentures of issue, यानी कितने number of debenture issue करने, then face value क्या होगी debentures की, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एंड द टर्म ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन की टर्म्स क्या होगी. सेकेंड प्रोसीजर है रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर. इफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू exceed the aggregate paid up capital and free reserve, then in such a case a resolution is need to be passed in general meeting of the shareholder. If the value of debenture issue exceed the aggregate paid up capital, यानी आपकी डिबेंचर की issued value paid up capital से ज़्यादा रही, and free reserve, then in such a case the resolution is need to pass, या free reserve रहा तो ऐसे समय में आपको resolution पास करने की ज़रूरत होती है, और वो रिजोल्यूशन आपके शेयर होल्डर के जनरल मीटिंग में वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है. थर्ड है कंसेंट ऑफ सेबी. कंसेंट ऑफ सेबी. If the issue value of debenture exceed 1 crore or more, the
परमिशन ऑफ सेबी इज मैंडेटरी, यानी इफ द इशू वैल्यू ऑफ डिबेंचर, यानी आपके डिबेंचर की इशू वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा रही, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा रही, ऐसे समय में आपको सेबी की परमिशन लेना मैंडेटरी है, या सेबी की लेकर परमिशन लेना कंपल्सरी रहता है। देन नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज is required before the company issue prospectus to the public. Prior approval of stock exchange is required before the company issue prospectus to the public, यानी जो प्रायर अप्रूवल है स्टॉक एक्सचेंज का वो लेना कंपनी को, या डिबेंचर्स इशू के पहले लेना पड़ता है कंपनी को। आपकी जो भी प्रॉस्पेक्टस है कंपनी के, वो प्रॉस्पेक्टस पब्लिक में इशू करने से पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग इज द इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, यानी क्रेडिट रेटिंग इज द इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट worthiness of a business concern. As per the guideline laid down by SEBI 2000, the company has to get its debenture rate by 2 recognized credit rating agencies and should be disclosed in the prospectus. यानी as per its guideline SEBI 2000, the company has to get debenture rated by 2 recognized credit rating agencies, यानी जो credit rating agencies है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 2 रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग डिस्क्लोज किया जाता है एंड देन प्रॉस्पेक्टस में उसे मेंशन किया जाता है। देन है ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड नीड टू बी बिल्ट बिटवीन द कंपनी एंड ट्रस्टी, यानी जो ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट डीड नीड टू बी बिल्ट बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्टी, यानी ट्रस्ट डीड जो है कंपनी में या ट्रस्टी में ये ट्रस्ट डीड किया जाता है। ट्रस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर एंड द रिड्रेसिंग देयर ग्रीवेंस और कंप्लेंट इफ एनी, यानी ट्रस्टीज जो होते हैं वो ट्रस्टीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, यानी डिबेंचर्स होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड द रिड्रेसिंग देयर ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट, यानी जो भी कंप्लेंट्स है या जो भी ग्रीवियंस है उसके लिए सॉल्व करने के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। If a company make default, the trustees can take the necessary step to provide justice to the debentures holder. The company make default, the trustees can make the necessary step to provide the justice to the debentures holder, and the trustee ensure that the mortgages property is kept insured and maintained in a proper condition, यानी जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी मॉर्टेजेस जो प्रॉपर्टी है उस मॉर्टेजेस प्रॉपर्टी को केप करके इंश्योर्ड एंड मेंटेन इन अ प्रॉपर कंडीशन, यानी उसे केप करके वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं या मेंटेन अ प्रॉपर कंडीशन। इन केस ऑफ डिफॉल्ट द ट्रस्टी आर गिवन द पावर टू सेल एंड रियलाइज द सिक्योरिटी विदाउट द एड ऑफ द कोर्ट, यानी इन केस ऑफ default, the trustee are given the power to sell and realize the security without the aid of the court. Next है issue of prospect. Prospect is a medium of advertisement for issuing of debenture, यानी prospect क्या है, एडवर्टाइजमेंट का एक मीडियम है, एक सोर्स है फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर, यानी
डिबेंचर इशू करने के लिए. इट हैज़ टू बी फिल्ड विथ रजिस्ट्रार बिफोर इशूइंग इज टू द पब्लिक. यानी इट हैज़ टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार बिफोर इशूइंग इज टू द पब्लिक. यानी पब्लिक को इशू करने से पहले रजिस्ट्रार के पास हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रॉस्पेक्ट है वो प्रॉस्पेक्ट फिल करना पड़ता है. देन नेक्स्ट है रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटिंग डिबेंचर. अरेंजमेंट आर टू बी मेड बाय कंपनी फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी थ्रू द कंपनीज बैंकर. यानी arrangement are the made by company for issuing application money to the company's banker. यानी जो डिबेंचर का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए कंपनी क्या करती है, बैंकर्स को अलाउड करती है. देयरफॉर रिजोल्यूशन नीड टू बी पास बाय बोर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. यानी जो भी रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन बोर्ड पास करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं. किसके लिए, तो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के लिए एंड डिबेंचर अलॉट करने के लिए. देन नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. आफ्टर रिजोल्यूशन इज पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग द डिबेंचर आर इशू टू इन्वेस्टर विद इन द 3 months फॉर द डेट ऑफ अलॉटमेंट. यानी बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के बाद डिबेंचर आर इशू टू द इन्वेस्टर विद इन 3 months फॉर द डेट ऑफ अलॉटमेंट. यानी जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के बाद डिबेंचर इशू द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर को डिबेंचर इशू करने के लिए का जो टाइम है वो 3 months का होता है. कब, आपके डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी डेट ऑफ अलॉटमेंट तय होने के बाद. डिबेंचर सर्टिफिकेट आर प्रिपेयर बाय द सेक्रेटरी एंड साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स. यानी जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है एंड इस पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर ली जाती है. डिबेंचर आर क्रेडिटर इन डीमैट अकाउंट. यानी जो डिबेंचर होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है इफ दे आर इन डिमटेरियलाइज फॉर्म. यानी डिबेंचर आर क्रेडिटेड इन डीमैट अकाउंट इफ दे आर डिमटेरियलाइज फॉर्म. डिमटेरियलाइज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टाइप से आप डीमैट अकाउंट में डिबेंचर्स क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर्स कर सकते हैं. देन है रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ डिबेंचर्स होल्डर. पोस्ट अलॉटमेंट all details of debentures holder are to be recorded in register of debentures holder. Post allotment all details of debentures holder are to be recorded in the register of debentures holder. यानी जो भी आपकी अलॉटमेंट है उस अलॉटमेंट की ऑल डिटेल्स डिबेंचर्स होल्डर आर द रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर. यानी डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में वो क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है. इफ नंबर ऑफ होल्डर्स एक्सीड 50 द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ डिबेंचर्स होल्डर. यानी इफ नंबर ऑफ होल्डर एक्सीड 50 यानी 50 से ज़्यादा होल्डर्स रहे द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ डिबेंचर्स होल्डर. यानी ऐसे समय में कंपनी क्या करते हैं, मेंटेन इंडेक्स ऑफ डिबेंचर्स होल्डर. देन नेक्स्ट है डिबेंचर trustee. A company which issue prospectus and invite more than 500 persons to buy its debenture has to appoint one or more debentures trustee. यानी a company which issue prospectus or invite more than 500 person to buy the debenture has to appoint one or more debenture trustee. यानी जो कंपनी है, जो कंपनी prospect थ्रू पब्लिक को इनवाइट कर रही है डिबेंचर के लिए, या 500 से ज़्यादा पर्सन डिबेंचर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कंपनी को
एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टी की ज़रूरत होती है। कंपनी इशूइंग सिक्योर डिबेंचर also must appoint debenture trustee, यानी कंपनी issuing secure debenture also must appoint debenture trustee, यानी कंपनी क्या करती है, secure debenture issuing करती है, appoint debenture trustee. Debenture trustee are institute which protect the interest of the debenture holder. एंड जो डिबेंचर ट्रस्टी होती है आर इंस्टीट्यूट विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, यानी वो क्या प्रोटेक्ट करती है, आपकी जो भी डिबेंचर्स होल्डर है उस डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं. द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स मूवेबल एंड इनमूवेबल असेट और असेट ऑफ इस सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, यानी जो भी कंपनी है वो कंपनी मूवेबल इनमूवेबल असेट पे क्या करती है, चार्ज करती है. इन सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी, या कंपनी सब्सिडरी कंपनी रहेगी या होल्डिंग कंपनी, उसके मूवेबल या इनमूवेबल असेट पे वो क्या करती है, चार्ज करती है. चार्ज इज क्रिएटेड इन आवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, यानी चार्ज इज क्रिएटेड इन आवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी. चार्जिंग क्रिएटेड इन आवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, यानी डिबेंचर ट्रस्टी के जरिए ये जो चार्ज है वो क्रिएट किया जाता है. द ट्रस्टी बिकम अ कस्टडियन ऑफ द असेट विच चार्ज ऑन हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी जो डिबेंचर ट्रस्टी होती है वो क्या होती है, चार्ज कस्टडियन ऑफ द असेट विच चार्ज ऑन बीन क्रिएटेड, यानी उस असेट की वो क्या होती है, कस्टडियन होती है. डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बिफोर prospectus or letter of offer letter is issued or within 60 days after the allotment of debenture, यानी जो भी आपका prospectus है या जो भी letter of offers है, letters of offer prospectus पब्लिश करने से पहले या आपके जो भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर 60 डेज आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है. यानी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स या बिफोर द प्रोस्पेक्ट या लेटर ऑफर्स इशूइंग 60 डेज के अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर से 60 डेज के अंदर आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है. द ट्रस्टीज मस्ट गिवन अ रिटर्न कंसेंट टू एक्ट अ डिबेंचर ट्रस्टी, यानी जो ट्रस्टी होती है मस्ट गिव अ रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज डिबेंचर ट्रस्टी. एंड द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर लेटर मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, यानी जो भी आपका प्रोस्पेक्टस होगा, जो भी आपका लेटर ऑफ ऑफर होगा, ऑफर लेटर होगा, उस ऑफर लेटर में, प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन करना मस्ट होता है. एंड नेक्स्ट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड. Company enters into a contract with one or more debenture trustee. कंपनी क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा कंपनी ट्रस्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है. द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज रिटर्न द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, यानी जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है वो टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट इज रिटर्न, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उस रिटर्न एग्रीमेंट में डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स किया जाता है, यानी जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसे हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं. इट इज़ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट ऑफ अ कंपनी टू द ट्रस्टी. ये क्या है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है कन्वेइंग द असेट ऑफ कंपनीज ऑफ द ट्रस्टी. द डीड ऑल्सो डिफाइन द राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी.
द डीड ऑल्सो डिफाइन, यानी जो डीड है वो क्या डिफाइन करती है, राइट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर एंड डिबेंचर्स होल्डर के राइट्स डिफाइन करती है, एंड द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिबेंचर्स ट्रस्टी, यानी ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिबेंचर्स ट्रस्टी. Company has to execute the deed within 3 months of closure of issue, यानी कंपनी हैज़ टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 months ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यूअर, यानी आपकी जो भी इश्यूअर्स की क्लोजर डेट है उसके विद इन 3 months में आपको ये डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है. मेंबर्स as well as debentures holder can inspect the deed and also get a copy it by paying a certain fee. यानी जो भी हमारे मेंबर्स है या जो भी डिबेंचर्स होल्डर है उनके एग्रीमेंट को वेरीफाई करके members as well as debenture holder inspect the deed and also get a copy it's by paying a certain fees करके उस deed की copy हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. मीन्स कंपनी हैज़ टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ डेट, यानी आपकी जो भी इश्यू ऑफ डिबेंचर की डेट है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर की डेट ख़त्म होने के बाद 3 months से पहले आपको ये करार करना पड़ता है या ट्रस्ट डीड करनी पड़ती है. So friend, today discuss the procedure for issuing of debenture. First is board resolution, second is resolution by shareholder, third is consent of SEBI, fourth is approval of stock exchange, fifth is credit rating, sixth is trust deed, seven is issue of prospectus, eight is receiving application and allotment debenture, 9 is issue of debenture certificate, 10 is register and index debentures holder, then debentures trustee and the debentures trust deed. The various points discussed in today's lecture. Thank you friends.